प्रिपरेशन पार्ट ओवर होने के बाद नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट इट। मैं 13 अक्टूबर को ट्रिप पे जाने का प्लान किया है एंड फाइनली 13th मॉर्निंग केम विथ ब्यूटीफुल सनी डे, परफेक्ट फॉर स्टार्टिंग ड्रीम जर्नी। सफिशिएंट रेस्ट लेने के बाद और अपने लव्ड वन से ब्लेसिंग्स लेने के बाद आई स्टार्टेड माई ड्रीम जर्नी। मेरा आज का एक्सप्लोरिंग डेस्टिनेशन है त्रिशूल, जो कि यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर पे है। With each kilometers I felt like wow man I did it, क्योंकि मैंने जो प्लान किया एंड फाइनली मैं उसे कर रहा था। It is really like a wonderful feeling. On that day I felt that starting something is most important phase. Once you start with heart, it's all yours. मैं अपने लाइफ का एक बेस्ट मोमेंट एंजॉय कर रहा था। Soon I realized that somebody honking on me. इसलिए नहीं कि उन्हें ओवरटेक करना था, इसलिए कि वो मुझे ऑल द बेस्ट विश कर रहे थे। Or as soon as I stopped at the traffic signal, some bikers expressed their love by taking pictures with me in the middle of the traffic. That's really boosted my energy. अब मैं केरला स्टेट में इंटर कर चुका हूँ और यहाँ से त्रिशूल अराउंड 70 किलोमीटर्स है। रोड काफ़ी अच्छी है। फाइनली हमने पालक्कड़ को क्रॉस कर लिया है। मैं आपसे ये सब इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप भी अपने ड्रीम्स को जीना स्टार्ट करें। इट इज़ रियली लाइक अ वंडरफुल फीलिंग दैट यू हैव एवर हैड। एंड ये है आउटर पार्ट ऑफ त्रिशूल। यहाँ का रोड थोड़ा सा नैरो है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिससे कि ट्रैफिक भी स्लो चल रही है। सो लेट्स गो स्टडी।
एंड अभी अराउंड मुझे 100 किलोमीटर हो चुके हैं राइड करते हुए. सो आई थिंक आई नीड अ ब्रेक टू गिव सम रेस्ट टू माई बाइक. तो 10 मिनट्स के ब्रेक में मैंने होटल बुक कर लिया है. होटल बुक करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करें. ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से आपको थोड़ा सा चीपर और अपनी लोकेशन के हिसाब से आप होटल ढूंढ सकते हैं. तो फाइनली हम त्रिशूल पहुंच चुके हैं. I'm heading towards my hotel. And this is my hotel Peninsula. So let's go and check in. और ये है मेरा रूम. यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करने के बाद I will go and explore the city. So finally this is श्री वडकुमनाथन टेम्पल और यहीं पे फेमस त्रिशूल पूरम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो कि नॉर्मली अप्रैल और मई में होता है, जहाँ पे एलिफेंट्स को एक कल्चरल वे में डेकोरेट किया जाता है. टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा सकता. एंड ये सिटी के बिल्कुल सेंटर में है. और अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ का लेडी ऑफ डॉलरस चर्च. सो ब्यूटीफुल, वाइट कलर्ड, सुपर्बली मेड. कल हम एक्सप्लोर करने वाले हैं अतिरापल्ली वाटरफॉल. तो स्टे ट्यून्ड. टिल देन अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. फिर से हम मिलेंगे एक नई एक्सप्लोरिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए बी एक्सप्लोरर, कीप स्माइलिंग, एंजॉय लाइफ. थैंक यू.